Hello everyone, this is Gaurav. Today we discuss about the topic multi-threading. So first we see what we discuss in multi-threading. First we define what is multi-threading. Then we see the process and thread multitasking. Then we see the differentiate between the multitasking and multi-threading. Then we see how to creating a thread class. Then runnable interface. And we see the life cycle of a thread also. And then we do the some practical examples related to the multi-threading. Let's start. So first is what is multi-threading. So when we the multi-threading terms, there is a one terminology thread. So an executing program is called a process. Everyone know that what is process. An executing program is called a process. Then each process can have a single thread or multiple thread. So that the thread is the smallest unit of a process that can run concurrently with other parts of the same process. So when we execute multiple thread at the same time, it is called multi-threading. So I hope everyone clear. So what is thread? So executing program is called a process, and each process can have a single, हर एक process के अंदर एक single या multiple threads होता है. So that thread is the smallest unit होता है process का that can run concurrently with the other parts of the same process में. और जो execute multiple thread के execute होते हैं at the same time, that is called a multi-threading. In other words, we can say that in Java technology that allow multiple parts of the program to perform simultaneously, that result is maximum CPU utilization. So in a multi-threading process, thread run in parallel, it is easy to switch between the threads. So multi-threading saves memory, does it not allocate separate memory for each thread. For a general example, you have to see that when you work in a while listening a song, you can work in a doc file, and when you type any doc file, you see that when you enter any wrong word, that red line will be show up. So it's also a parallel execution. It's all in backend. The spelling checker detector will be run up, and you can type front way. So these all are the process of the multi-threading. Now next is multitasking. So multitasking means executing multiple tasks simultaneously. This means if share the single CPU across multiple tasks and switch between the tasks whenever required. So there are two types of multitasking. First one is process based multitasking, which is also called multiprocessing, and the second one is thread based multitasking, which is also called multi-threading. Now first we see process based multitasking क्या होता है. So in multiprocessing, every process has a separate memory allocation, and each process is heavy light, and hence switch between the process is very time consuming. So hence communication between them is also very high. And next one is thread based multitasking. In multi-threading, multiple threads share the same memory. So each thread is a lightweight process, hence communication between them thread is low. So these are the two difference also we have to see, process based multitasking and thread based multitasking. Now let's see the differentiate between the multitasking and multi-threading. So I already discussed what is multi-threading and what is multitasking. So multitasking you have to see is when a single CPU performs several tasks at the same time. To perform multitasking, CPU switch among these tasks very frequently so that can interact with each program simultaneously. While in multi-threading, process can have multiple threads simultaneously, and the CPU switches among these threads so frequently, making an impression on the user that all threads are running simultaneously, is called multi-threading. So there is a difference in multitasking. The system allow executing multiple program and tasks at the same time, while in multi-threading the system execute multiple threads
of the same or different process at the same time. So in multitasking, CPU has to switch between multiple programs so that it appears multiple programs are running simultaneously, and in multi-threading, CPU has to switch between multiple threads to make it appear that all threads are running simultaneously. Okay. And the one more difference is that multitasking allocates separate memory and resource for each process and program. In multi-threading, belonging to the same process share the same memory and resources of that process. So these are the difference between the multitasking and multi-threading. Now we see in Java language, multi-threading can be of two different ways. First one is using the thread class, and the second one is using the runnable interface. So let's first discuss about the thread class. So thread class, how to creating a thread class. So creating any user defined class, make that one has a derived class. Okay. तो पहला स्टेप क्या होता है कि जब भी हम कोई एक यूजर डिफाइंड क्लास बनाते हैं, दैट मेक दैट वन हैज़ अ ड्राइव्ड क्लास ऑफ थ्रेड क्लास, तो उसका हम क्या बनाते हैं, ड्राइव्ड क्लास. देन नेक्स्ट वन इज ओवरराइड रन मेथड ऑफ थ्रेड क्लास. ओके, देन वी हैव टू राइट द ओवरराइड रन मेथड को हम लोग ओवरराइड करते हैं और थ्रेड क्लास में इट कंटेन द लॉजिक ऑफ परफॉर्म एनी ऑपरेशन. Then next one is create an object for user defined thread class and attach the object to predefined thread class object. जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने my thread class का ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट को अटैच करा है किसके साथ, thread class ऑब्जेक्ट के साथ. Okay, you have to create the object obj and you have to attach this object with the thread class. Then last step, call start method of a thread class to execute the thread. ठीक है, थ्रेड को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग कौन सा मेथड को कॉल करते हैं, स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं. लेट्स सी द सिनेरियो इन अ प्रोग्राम फ्लो. जैसे आपने लिखा क्लास नेम, ओके, एक्सटेंड्स थ्रेड. ये है वी हैव टू राइट द पब्लिक वॉइड रन मेथड. ये कहाँ से रन होगा, जब हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं. ओके, हियर वी हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास नेम. ओके, और जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो आप ऑब्जेक्ट रेडी स्टेट में कहाँ भेजते हैं, थ्रेड के ऑब्जेक्ट में. Okay, you have to put up this object into the thread class, and then we'll start the to running state and then execute in the run method. So this is the flow of a thread class, how to work. Okay, so let's see one example also. Okay, so let's see the example. We have to know clear the concept how to use the thread class. Now let's see some practical. Here we have to create one user defined class. That is the first step, creating user defined class and make that one class as a derived class of a thread class. ठीक है, तो मैं एक derived class बना रहा हूँ यहाँ पे. तो मैंने एक derived class का नाम दे दिया, सपोज फॉर एग्जाम्पल my thread. Okay, any example, any name you can write. my thread extends, किसको extends करेंगे आप, thread class को. ओके, तो फर्स्ट स्टेप आपने एक यूजर डिफाइंड क्लास बनाया जिसको एक्सटेंड कर एक ड्राइव क्लास बनाई थ्रेड से. ओके, देन हियर यू हैव टू राइट द रन मेथड, पब्लिक वॉइड रन मेथड. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, आपने ओवरराइड कर दिया रन मेथड ऑफ अ थ्रेड क्लास टू राइट द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम. देन यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर डिफाइंड क्लास एंड अटैच दैट ऑब्जेक्ट. ओके, सो यू हैव टू क्रिएट हियर क्लास. हियर क्लास का नाम मैंने इसे दे दिया थ्रेड डेमो. एंड हियर यू हैव टू राइट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. नाउ अब यूजर डिफाइंड जो क्लास बनाई थी आपने माई थ्रेड, उसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम.
माई थ्रेड, आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाया और एग्जाम्पल आपने दे दिया M1, ओके, इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड. नाउ दिस ऑब्जेक्ट यू कैन पास इनटू द थ्रेड ऑब्जेक्ट. ओके, तो आपने एक थ्रेड क्लास बनाया, इसका ऑब्जेक्ट दिया T1 दे दिया मैंने, इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, और यहाँ पे आपने उस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया M1 मेथड को. ओके, नाउ यू हैव टू कॉल दैट मेथड T1 डॉट स्टार्ट मेथड. तो जैसे आप स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे वो किसको कॉल करेगा, रन मेथड को. ओके, आई जस्ट सेव दिस प्रोग्राम एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट. अभी मैंने लॉजिक नहीं लिखा है रन मेथड में, सो आई राइट टू वन लॉजिक हियर, व्हाट यू वांट टू प्रिंट. ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल. Okay, you can print any message here. Loading. Okay, I just give one message here, loading, and close. Just save the program and try to execute. Okay, you have to write Java C space thread demo dot Java. ओके, कंपाइल सक्सेसफुल. रन करने के लिए आपने लिखा जावा स्पेस थ्रेड डेमो. ओके, यू हैव टू सी दैट लोडिंग विल बी प्रिंटेड हियर. ओके, सो दिस वे यू हैव टू क्रिएट अ using a thread class. Okay, we have to do some more practical example later. Just we have to clear about how to use the thread class. So I hope everyone create, just follow 3 steps. First step, we have to create a user defined class which is as a derived class of a thread class. Okay, second step, you can override the run method. In run method you can write the logic of the program. Third step, you can create a user defined class object, and that object will put into the thread class. Okay, and then we have to call the start method where we have to go to the running state. Okay, so this is the logic of the thread class. Okay, so now let's see the next method of thread class, that is using runnable interface. इससे पहले हम लोगों ने देखा था क्रिएटिंग अ थ्रेड क्लास, कैसे हम लोग थ्रेड क्लास क्रिएट करते हैं. बाय यूजिंग थ्रेड क्लास कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे. नाउ वी हैव टू सी by using runnable interface. So define the class that implements the runnable interface and implement the run method of the runnable interface in the class. तो हम एक क्लास डिफाइन करेंगे जो रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा और रन मेथड को भी इम्प्लीमेंट करता है रनेबल इंटरफेस. ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप आपके क्या रहेगा, यू हैव टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द डिफाइंड क्लास. जो आपने क्लास डिफाइंड करी है उसके इंस्टेंस क्रिएट करेंगे हम लोग. Then you have to create an instance of the thread class using the thread runnable target constructor. Then last step, start the thread by invoking the start method on your thread object. ठीक है, let's see. Okay, let's see the one example. Okay, so let's see the implementation of runnable interface. तो फर्स्ट स्टेप जैसे मैंने कहा था कि you have to create a डिफाइन अ क्लास डेट इम्प्लीमेंट करेगा रनेबल इंटरफेस को, और उसमें हम लोग रन मेथड का इम्प्लीमेंटेशन मेथड भी उसी रनेबल इंटरफेस क्लास में हम लोग लिखते हैं. सो फर्स्ट आई क्रिएट अ वन क्लास विच इम्प्लीमेंट द रनेबल. ओके, सो आई क्रिएट वन क्लास हियर. जस्ट राइट my runnable, my run. Okay, I just write my run implements runnable. Okay, and here you have to write the override method को भी हम लोग implement करते हैं. So आपने लिखा public void run method. Okay,
So here we have to write one for loop we have to use here, integer I equals to 0, I less than equals to 5, I plus plus. Okay, and then here we have to print system.out.println. Okay, you have to write my run for thread name and here you have to use the get name method. Okay, so get name method you can write here thread dot current thread dot get name method. So get name method I not defined, so that's why you have to show that. Just I create the thread name method. Okay, I just put it here, so you have to clearly visible. Okay, so now here we have to just close the method here. Okay, so for loop आपने यहाँ पे close कर दिया, and here you have to close the run method and here you have to close the main class. Now we have to create a main method. So I write class runnable demo main function public static void main. Okay, so all the steps you have to just previous what we have to write it in the थ्रेड क्लास. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूजर डिफाइंड क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे. तो यूजर डिफाइंड क्लास क्या है आपकी, माई रन. तो आप सबसे पहले माई रन क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे. आई राइट R1 इक्वल्स टू न्यू माई रन. ओके, नाउ सो दिस पासिंग रनेबल ऑब्जेक्ट टू द थ्रेड क्लास कंस्ट्रक्टर. फिर मैं एक थ्रेड क्लास बनाता हूँ. थ्रेड आपने नाम दे दिया T1 इक्वल्स टू न्यू थ्रेड यहाँ पे आप क्या पास करेंगे, उस रनेबल का ऑब्जेक्ट, दैट इज आपने क्या बनाया है R1. ओके, नाउ यू हैव टू यूज द T1 डॉट सेट नेम मेथड आपने यूज करा. सेट नेम मेथड में आपने एक नेम पास कर दिया. यहाँ पे पास द नेम हियर गौरव. ओके, देन यू हैव टू कॉल द T1 डॉट स्टार्ट मेथड. सो T1 डॉट स्टार्ट मेथड जब आप कॉल करेंगे, देन यू हैव टू गो टू द रनेबल इंटरफेस स्टार्ट मेथड. ओके, जस्ट सेव द प्रोग्राम, try to execute. Java C space file name is runnable demo. First you have to compile the program. Okay, compile successful. रन करने के लिए आपने लिखा Java space runnable demo. Okay, so you have to see here 5 times will be printed. My run for thread name is Gaurav, 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 Gaurav. Okay, so I hope everyone clear it. The implementation of runnable. You can create one more set name and then you have to start. Let's see. Just we have to implement here
I just copy this part and paste it here. We have to create the thread T2 object. Okay, and then you have to pass the T2 dot set name. Okay, here we have to pass the name here Rohit, and T2 dot start. Okay, just save the program and try to execute. Okay, so you have to see my run for the thread name Rohit. So sometime first T2 object will be loaded, or sometime the first name will be loaded. So every object is created 5 times. Okay, so I hope everyone cleared the concept of how to create a thread class and how to implement the runnable interface. So I hope everyone clear it. So this is for the multi-threading part 1 session. We'll continue the multi-threading part 2 session in the next lecture.